Am I audible, Vishwa? Yes, sir. You are audible. So before that, let me मैं टिकिए विश्व दो गोटे मिनिट वेट करिवा लेट पीपल जॉइन तापरे स्टार्ट Sure, sir. So people keep joining, so we can wait for a couple of minutes. Namaskar. Good evening. So all of you are appearing this February in the mains, or you are in the preparation stage, or okay, some of you would be preparing for OPSC 2022. सर आपण वॉइस टिके ब्रेक होची वॉइस ब्रेक हो सर सर हाँ सर शुड आई कंटिन्यू गोटे मिनिट विश्व ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे हाँ हाँ श्योर सर तापर मिस्टर सर 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 आपण वॉइस टिके ब्रेक होची वॉइस सिग्नल ब्रेक होची तो सुबुजी रे ऑडिबल के हाँ सर सर क्लियर आसुनी हाँ विश्व विश्व मो कथा रे सर वॉइस ब्रेक होची वॉइस ब्रेक होची बट सर आई थिंक आपण स्टार्ट करि परिवे नाउ इट्स क्लियर सर Okay, so guys, we have Vishwa with us. Vishwa का विषय में ये भाषण तो विश्व की हमारा OCS 2020 जो रिजल्ट रे already हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट with rank 68 और तंकर बैकग्राउंड को है तो जो talented and हमें यदि बहुत inspiring and career make प्रस्ताव करिसंती I am I think not wrong I think it is so I am Kozhikode right तापरे तापरे I am Kozhikode हेलो सर नमस्कार I am Kozhikode साउंड टोटल सुबोनी किछि Vishwa can please हाँ हाँ सर maybe I am you do हाँ हाँ आपने बिल्कुल आसुनी वॉइस सर
sir, ठीक है तो हमने start. Okay, sir. So, sir, thank you so much for introducing me. So, Sarango voice take properly audible honi. So, I would introduce myself before I start the session. And samastango bahut bahut dhanyawad to attend this. So we are going to discuss some of the political science topics. Okay. So I have cleared, as sir said, I have cleared, Namaskar, I have cleared the OCS 2020 this year with a 68 rank. And also I come from a strong academic background. So I've done my engineering from IIT Kharagpur and also my management from IIM Kozhikode. Civil services more passion thila, I am pursuing. I was already working in corporate, but I left that job and I am now, so I wanted to do civil services. So that's why I'm here. So that is my introduction. And thank you so much, sir, for always encouraging and supporting. So I may start kariba. Aji first class I will discuss some of the topics which I have chosen जोगुड़ा की normally आसुची OPSC exam रे आउ जहाँ भी आमे discuss करिबा that would be as per the OPSC syllabus and pattern. Left. Hello, sir. You are not audible. Not audible. Sorry everyone, I got disconnected, but we will again restart. So in this class, we will discuss some of the selected topics, and from next class, we will go as per the syllabus. So ଆମର जो political PSIR ଅଛି part 1, paper 1 and paper 2, and paper 1 has two parts, part A and B, and paper 2 has two parts, part A and B. So we will go in that chronology, we will go in that order. Okay. And sir mate already briefing kari deyichanti. You people are, so some of you are attempting the 2021 mains in February, and some of you are going for a long-term preparation, which is for 2022 OPSC 2022, for which you will fill the form. So for all the students of political science, it would be definitely beneficial. And even if you are preparing, even if you have studied political science or you are studying political science in graduation level, it would be very beneficial for you. ଆଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ଖାଲି ତ ପଢିଦେଲେ ହବନି, ଆମକୁ exam oriented answer ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, so that it fetches marks. Okay. And let me tell you, political science ଗୋଟେ ବହୁତ preferred subject, whether it is a OPSC or UPSC. UPSC ର ତମେ ଦେଖିବ last several years, most of the toppers are from political science. So they have taken political science. Tina Dabi, Ria Dabi, and it is a good mark fetching subject, provided you understand the topic, understand the subject. ଆଉ political science ଗୋଟେ advantage ହଉଛି, ବୁଝିଗଲେ ସେଗୁଡା କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଅନ୍ୟ optional ରେ maybe ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ ପୁଳେ, ମାନେ OPSC ରେ ତ ଦିଟା optional. But political science would be much more important because ମାନେ in future, because OPSC ର pattern ବି change ହେଇଯାଉଛି. So you will have one optional. ଆଉ ସେଟାକୁ ଯଦି କୋର୍ସ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାର ଅଛି, ଆଉ political science can be taken by anybody. ତମର engineering background ଅଛି, you are a doctor, you are a commerce graduate, or you have you have come from arts line. So if anybody can take political science, and you can actually do a graduate level of study. जोटा कि केते गुडा other optional ले, it is very difficult to do a graduate level study if you have not taken it as a graduate subject. Okay. So I will tell you the topics
for today. And ଯେତେବେଳେ ବି question କିଛି ଆସିବ, please raise your hand or put it in a chat. ଶୁଭୁଛି? ଭଲସେ ଶୁଭୁଛି? Rosalind? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay, okay. ठीक अछि तो ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି question mind को आसीबो, please ask me without any hesitation, or towards the end of the class you can ask me. I would happy to clear all the doubts. Okay, so today's topics are, so I have kept a theoretical topic, that is John Rawls theory of justice, and then two more topics, those are political culture and political economy. Political culture, political economy. So political economy didn't come in OPSC 2020, so next year asibar chance bahut. Even John Rawls theory of justice has not come in the last year exam. माने मु जो मेंस टा लेखिथिली सेथरे आसी नथिला, तो फेब्रुआरी रे जो एग्जाम होची सेठी आसीबार बहुत भलो चांस अछि. So I have deliberately chosen these topics because these are good topics and these have lot of theoretical insight. So it is good for you to know all this. Okay, so we will start, and जेତେବେଳେ କିଛି doubt होगा, please do not hesitate to ask me. Okay, so I will share the screen. Sir, just before that, please explain about the sources for PSIR. Okay, okay, good question. किए पचारले, what's your name, please? Rasmi Ranjan Rao. रश्मि. ओके, तो सोर्सेस ऑफ पीएसआईआर मो सोर्स कहबी, आउ किए जो माने क्लियर करिथिबे यूपीएससी और ओपीएससी से माने तांको सोर्स, आई मीन इट माइट बी डिफरिंग फ्रॉम देम. ओके, बाय द वे आई हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर यूपीएससी मेंस. आई एम waiting for my results. Sources of PSIR, considering the changing format, you have to follow a very good source, कारण time सेते मिलिबनी, particularly optional पाई, because एथरक GS is going to be very vast. तेणु सोर्स जहाँ भी फॉलो करिवो, you should be आई मीन ताको ही फॉलो करियो पड़िबो. गोटे होची इंडियन पॉलिटिकल थॉट अछि. ओके, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पाई गोटे ओपी गौबांकर बही अछि, सेटा यू कैन परचेज, माने यू शुड परचेज, कारण तार सॉफ्ट कॉपी आई थिंक मिलुनी मार्केट रे. सो ओपी गौबांकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट. ओके, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी ओपी गौबा. ओके, or there are other books like other compilations rather, जदि तमर political science टिके understanding अछि, you can also go for a compilation by only IAS. Okay, and Subra ma'am ko some portion of the notes you can study, not all, because सेथरे केते गोडा टॉपिक बहुत vast देइचे, सेते requirement नाही एग्जाम रे, कारण एग्जाम रे लिमिटेड टाइम थाए आउ लिमिटेड वर्डिंग भितर आंसर लिखवा को है, तो गोटे आंसर बहुत बड़ लिखि भी हबनी. ओके, सो ओनली है सुब्रा मैम को नोट्स प्लस ओपी गौबा एज ए टेक्स्ट बुक. इंटरनेशनल रिलेशन गोटे एंड्रयू हेवुड को बुक अछि, तार पॉलिटिकल थ्योरी भी अछि, से दीटा तमे रेफर करि परिबो. जो पार्ट गुडा मु कहिबी, कोन से फॉरेन ऑथर बही पूरा पढिबनी डिटेल ले, बिकॉज़ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओके, तो as we go forward मु सोर्स कही जेबी, आउ केते गुडा टॉपिक जेमति कि सपोज पॉलिटिकल कल्चर मु तो कोडी सोर्स रो पाइलिनी. सो आई हैव सर्च समवेयर, मु इंटरनेट रो आई डाउनलोडेड समथिंग एंड दैट वाज रियली गुड, बिकॉज़ से आंसर गुडा मु लेखितली एंड माने भलो सोर्स, तो मु से सोर्स गुडा कहि देबी तुमको. ओके, ठीक अछि. सो वी विल स्टार्ट. So we will start the John Rawls theory of justice. Are you saying something? Okay. Sir, हाँ, please tell me. yes sir, start कर दियो तुम पछे लास्ट में पछे में. Yeah, we'll start. Okay, we'll not waste time. We'll start. Yes sir. our last को जहाँ question दियो पचारिबो. So John Rawls theory of justice question को टाइप रो आसी पारे, both 20 marks रो आसी परिबो किंबा 60 mark रो आसी परिबो. John Rawls theory is a modern theory.
Okay, it is not a ideal, or it is not a it is very pragmatic, and it is not a old theory. It is a new theory. You can say that it is a contemporary theory. But John Rawls theory of justice रे केते गुडा पार्ट अछि जो गुडा की यूटोपियन. ओके, सो से गुडा हम डिस्कस करिबी काहे की से गुडा यूटोपियन. ओके, so John Rawls come from say social contract school lu hi asuchanti. Okay, and he has given a universal theory of justice, because normally kon hue, for example Karl Marx. So when Karl Marx talks, he talks about whom? He talks about proletariat. Okay, he talks about proletariat. He talks about माने से जो bourgeois और proletariat के भीतर conflict होची, which is a class conflict as per the Karl Marx. He is saying the power should be given, or the mode of production should be under the proletariat. So it is more inclined to a proletariat. Okay, or तमें your capitalism, it is more inclined to the capitalist society, the people who are businessmen, who are elite. Okay, so who have their talent in trading. Okay, or if you talk about any elite theory, so they only talk about elites. Or you see Dr. Ambedkar, he focused about the backward classes. Okay, so Bivina theorists, they have focused about a particular set of people, or particular category, or particular strata of people. John Rawls kintu nijara tanko theory, he has talked about everybody. So that is a very unique thing. So he has given a wholesome theory, okay, to everybody. Now I'll go to the next. So so for example classical liberalism जोटा मु कहउतली कि is biased towards the rich people. Classical liberalism रे कोन हुए कि it is saying कि there should be minimum intervention of the state. और classical liberalism रे से माने capitalist society की जो माने rich or talented people से माने को support करचंदी. Similarly जोटा होची आउ जोटा opposite जोटा कि positive liberalism or social liberalism, सेठी ସେମାନେ कहउचंती कि state should act as a agent for doing welfare of the society. So in the modern liberalism, it is favoring to the untalented and weaker section. For example, in India, so it is a social liberalism, but United States, it is a classical liberalism, which is a negative liberalism. Welfare state, concept of welfare state is based on the positive liberalism. But these जनक विषय के कहउचंती कि no, it is not. They are not saying. Marx also is focusing too much on equality, and it is in favor of poor, as I said. But John Rawls कौन करूचंती गोटे complete theory दोचंती, wholesome theory दोचंती, जोटा कि समस्तन को suit करूची, especially who are at the lowest strata of the society. Okay, तो John Rawls को केते गुडा concept मु जोटा कहली कि suppose से गुडा होची, those are actually utopian. Okay, so आमे first concept पढ़िबा जोटा कि original position, theory of original position. Okay, so original position माने कोन? Can you see this diagram? समस्ते diagram देखि परुचंदी? Yes, sir. Okay, एठी original position, हाँ, original position में जने लोक अछि, he or she is the policy maker. Okay, से ओरिजिनल पोजीशन में अछि ता माने कोन? इट इज बेटा बुझियो चेष्टा करो से कोन कहयो चाहूची. ही और सी इज देयर इन ओरिजिनल पोजीशन माने सी गोटे लेफ्टिस्ट नोए कि सी गोटे राइट विंग लोक नोए. ही इज नाइदर माने सी ही डजंट नो फ्रॉम व्हिच कास्ट ही बिलोंग टू, whether he is from a he is from a Brahmin caste, or he is from a Patidar caste, or whichever caste जो हम जो caste system अछि से को segment रे आछि, he doesn't know. So he is in the original position. Now से benefit कोन? Suppose जने जानी छि जे policy maker माने मु एठी parallel दे परिबी civil servant,
जदि सिविल सर्वेंट पॉलिसी सपोज गोटे बीडीओ कि तहसीलदार कि जने आईएएस ऑफिसर से माने पॉलिसी करिवे सोसाइटी पई जदि से माने ऑलरेडी जानि चंती से माने को कास्ट किबा को रिलीजन किबा को टाइप रो सोसाइटी रो बैकग्राउंड करूचंती तो से माने जते बडा पॉलिसी बनेइबे तो इट विल बी बायस्ड टुवर्ड्स देयर यू नो कास्ट और रिलीजन और बैकग्राउंड ओके तो जॉन रॉल्स कहउचंती इफ दैट पर्सन द पॉलिसी मेकर इज इन ओरिजिनल पोजीशन तो सी कौन करिवो जहां भी करिवो समस्त पय फेयर करिवो माने तार गोटे एनालॉजी होउची सपोज केक टा कटा होची 10 जण लोक अछंदी तो जे केक काटुची जदि सी जानी परिवो कि मु एई पीस टा मते मिलिवो तो सी सेई पीस टा टिके बडो काटे दबो बट सी जदि जानी ही नहीं कि को पीस केक रो पीस टा सी ही इज गोइंग टू गेट सो व्हाट ही विल डू he will cut it in equal parts माने 10 टा इक्वल पार्ट करियो so that he will not get less than anybody because से जदि गोटे बड़ पीस कला तो बड़ पीस टा ताकू ही मिलिलानी so he will be a loser okay तो जॉन रॉल्स कहउचंती सो ओरिजिनल पोजीशन में से सबले रहिबो तनो से को बैकग्राउंड रो आसी से किछि जानि नाही ओके he is neither a leftist he is neither a right wing person he is neither a communist he is neither a capitalist nor a capitalist he is neither a proletariat nor a bourgeois okay तो से ओरिजिनल पोजीशन माने जीरो पोजीशन ने अछि से मिडिल ले अछि ओके तापर सेकंड कांसेप्ट होछि आ तो से किछि जानिनी तार निजर बैकग्राउंड ऊपर तापर तमे एक पिक्चर रे देखि परिबो there is a wheel of ignorance wheel माने कोन who can tell me what do you mean by wheel anybody simple english meaning कहि परिबो so wheel माने होछि परदा ओके wheel माने परदा परदा आ सेटा ignorance wheel of ignorance माने सी जो लोक मानन को पई पॉलिसी बनेइबो हाय हाय गुड इवनिंग चिंतामणि सी जो लोक मानन पई पॉलिसी बनेइबो सी तांको बैकग्राउंड विषय भी जानिनी माने से जानिनी कि मो धर 10 जण लोक मानन पई पॉलिसी बनौची काहार केते माने काहार केते से को माने कास्ट को रिलीजन न से को की झियो whether or that person is differently abled or that person is very rich or poor से किछि जानिनी ओके से तार कंपोजिशन जानिनी तो ता फଳରେ कोन होबो से जहां भी पॉलिसी करिवो सेटा समस्त पय करिवो ओके सी विल नॉट गेट बायस्ड नाउ जॉन रॉल्स कहउचंदी कि एमती गोटे सिस्टम हवा दरकार नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज अ वेरी यूटोपियन कांसेप्ट एटा कोन केबे प्रैक्टिकली हेई परिबो नै बिकॉज़ जने सिविल सर्वेंट हबो से तो पढिथिबो ना से पोवर्टी विषय रे पढिथिबो से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विषय रे पढिथिबो से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट विषय रे पढिथिबो से इंटर रिलीजन हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट विषय रे पढिथिबो तो से सब जानी कि ही एंड सेही लोक माने सिविल सर्वेंट हेबे जो माने पॉलिसी करिवे राइट तो सेटा केबे इम्पॉसिबल सेटा केबे सेटा तो सेटा सेति पई कुआ जाउची कि जॉन रॉल्स को थ्योरी रे केते गुडा पार्ट अछि जोटा कि यूटोपियन ओके देन ही टॉक्स अबाउट बट से कहउचंती कि जे पॉलिसी मेकर तार गोटे बेसिक रैशनैलिटी थिबो ओके से गोटे इंट्यूशन पावर थिबो से कोटा ठीक कोटा भूल जानि परिबो कोटा मोरल कोटा इमोरल जानि परिबो ओके नाउ ही टॉक्स अबाउट मैक्स मीन प्रिंसिपल okay and it is very important tome lekhibo answer re what is max mean principle so maximin principle mane hochi maximin mane maximum benefit okay and minimum risk now minimum risk and maximum benefit for whom the lowest strata of the people mane gote society ro सबटु तळे जे अछंदी तमे जदी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रे नबो ताले द बिलो पॉवर्टी लाइन ओके नाउ तमे अन्य पर्सपेक्टिव रे भी नहीं पारिबो सो बैकवर्ड क्लासेस देन वुमेन देन डिफरेंटली एबल्ड ओके पुअर यस जागृति सिंह पुअर तो सबु पैरामीटर खाली इकोनॉमिक पैरामीटर रे न सबु पैरामीटर रे जो माने तळे अछन तांकू सबटु मिनिमम रिस्क आ तांकू मैक्सिमम बेनिफिट नाउ सेटा हेले माने बिकॉज़ हां वुमेन डिसेबल्ड ऑफ कोर्स तो सेटा हेले कोन होबो जदी गोटे सोसाइटी रे तमे गोटे इमेजिन करो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे लोक अछंती से डिस्ट्रिक्ट रे जो सबटु तळे जो तळ लेयर रे जो लोक माने अछंती जदी तांकर ही उन्नति होउची तो ऑब्वियसली सोसाइटी रे उन्नति होउची बिकॉज़ जो माने ऊपर अछंती डू दे एक्चुअली नीड दैट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट नो दे मे नॉट नीड ओके सो तो जॉन रॉल का कांसेप्ट देखो
it is actually taking care of everybody. How which चिंतामणि पचार which topic is being discussed? So आमे discuss करूचे जॉन रॉल्स theory of justice. जॉन रॉल को हिसाब रे justice कौन? Okay, तांको theory of justice. So आमे discuss कले wheel of ignorance. आमे discuss कले theory of original position. माने policy maker केमती original position ने अछि. आउ maximum principle, maximum benefit for the people and the who are at the lower strata and with minimum risk. Yes, Smriti Pratibha, ko कौन तुम question अछि? You have जो raising wheels of सेटा आउटलेट डिस्कशन करते पे wheel of ignorance. आज्ञा Wheel of ignorance माने परदा पढिछि तमे देखि पारु न माने गोटे सिविल ओएस ऑफिसर सपोज सी पॉलिसी करिवो ओके से गोटे तहसील पई कि से गोटे डिस्ट्रिक्ट पई पॉलिसी करिवो तो सी जानि परनी कि परदा पड़ी जाइछि को लोक मानन पई पॉलिसी करिवो ओके सी जदि जानि जीवो तो देन प्रॉब्लम हे जीवो राइट बिकॉज़ he might get biased, he might just make the policy for rich or he might just make the policy for the poor or for the women. सी जदि गोटे women हेतिबो गोटे फीमेल हेतिबो से फीमेल मानन पई करिवो तो जॉन रॉल कहउचंती पॉलिसी मेकर सब बेले गोटे ओरिजिनल पोजीशन में रहइबो तार कोन से पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इकोनॉमिक ओरिएंटेशन रहिबनी आ से पर्दाटा पडिछि से देखि परनी मु का पई पॉलिसी करूची तो सी जतोल देखि परनी से पॉलिसीटा समस्तन पई ही करिवो राइट बुझ परलो तमे तमरो 10 जण सांग अछंती तमे तांको पई केक काटिबो किंतु तमे माने तमे भी सेथरे इंक्लूडेड तो तमे केक काटिबो किंतु तुमको जणा नै कि तुमको को पीसटा मिलिबो तमे जदि जानि परिबो आगरु तो तमे तम पई सबटो बड़ पीसटा काटिबो बट तमे जेहेतु जानि न यू विल मेक ऑल इक्वल पीसेस सो दैट तुमको का टू कम न मिलो ओके दैट इज द लॉजिक ओके तापर सर जो आपण यूटोपियन जो टर्म टा यूज करछन्ती सर तार मीनिंग टा कोन यूटोपियन माने होची फैंसी माने जोटा होची माने कोन कहलो जोटा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल न हो सेटा गोटे यूटोपिया माने सेटा गोटे इमेजिनरी ओके तमरा बराह अवतार इज अ इमेजिनरी टर्म राइट इट इज इन आवर बिलीफ इट इज नॉट अ डू यू सी एनी बराह अवतार यू डोंट सी इजंट इट माने बुझ पारलो तो यूटोपिया माने सही है यूटोपिया माने फैंसी इमेजिनरी तमे स्वप्न रे गोटे जिंस देखिबो जोटा कि पॉसिबल नुआ बट सेटा माने बट प्रैक्टिकली सेटा नुआ सेटा यूटोपिया इमेजिनरी दूर सुंदर ओके सो दैट इज यूटोपियन कांसेप्ट तो हमें बहुत गुडे यूटोपियन कांसेप्ट को जेमति कि प्लेटो को केस रे प्लेटो को जो फिलोसोफर किंग दैट इज एन यूटोपियन कांसेप्ट सेमिति कोन फिलोसोफर किंग किछ अछि किछ नाही जो माने किंग से माने रियल pragmatic king practical okay so our prime minister he is a practical leader he is not a philosopher king okay say sense रे बुझियो okay we'll go to the next slide okay self prior to end ha एटा होची तमरा self is prior to the end means people do not form opinion about themselves based on worldly experiences तो जे तमरा पॉलिसी मेकर सी तांकर ओपिनियन क्रिएट करिवे निज विषय बेस्ड ऑन रिलीजन कल्चर कास्ट सेक्स एंड जेंडर बिकॉज तांकर गोटे मोरल सेंस ऑफ जस्टिस रहइबो जे पॉलिसी मेकर ओके एंड पॉलिसी मेकर बिकॉज ही इज एट द ओरिजिनल पोजीशन ही विल ऑलवेज थिंक माने से इंट्यूशन ने जानिबो जिंसटा कोन बट सी ताको एक्चुअली सी ही कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस नाउ सपोज आई एम अ सिविल सर्वेंट and I realize कि I have lot of power okay मोर मु सेटा माने एक्सपीरियंस कली तो मु कोन करबी पावर ग्रैब करियो चाहिबी मु मोरालिटी को भूली जीबी ओके सो यू कैन नॉट सो जॉन रॉल्स कहउचंदी पॉलिसी मेकर कैन नॉट फॉरगेट हिज मोरालिटी एंड ही विल ऑलवेज बी अ माने ही कैन नॉट डिसाइड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बट ही शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस थ्रू इंट्यूशन ओके तापरे मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल ओके मैक्सिमम लिबर्टी प्रिंसिपल कोन मैक्सिमम लिबर्टी फॉर एवरीबॉडी इन द सोसाइटी नाउ सेटा केमिति हबो जणे जदी चाहेबो गोटे फेयर सोसाइटी क्रिएट करिया को आ सी निजर पब्लिक रीजनिंग अप्लाई करियो माने निजर गोटे माने तमे सपोज गोटे ऑफिसर आईएएस ऑफिसर और आईआरएस ऑफिसर
तमे निजर गोटे पब्लिक रीजनिंग गोटे रैशनल सेंस यूज करिवो कि कोटा ठीक कोटा भूल, देन यू विल एंश्योर दैट देयर इज मैक्सिमम लिबर्टी फॉर एवरीबॉडी। तमे केवल पुअर मानक पई भी कर परियोनी, तमे केवल रिच मानक पई भी कर परियोनी। ओके, एंड दिस इज आल्सो तमे ए थ्योरी सहित पैरेलल थ्योरी होची गांधी जींकर सर्वोदय मॉडल, जोटा कि मैं कहतली, बिकॉज़ सर्वोदय मॉडल ने तमरा समस्त को अपलिफ्ट करा जाउची। ओके, सो सर्वोदय मॉडल ले कोन होची, गांधी जी कहउचंती कि जो माने पुअर तांको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करो, जो माने रिच तांको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करो। ओके, तो सिमिलरली जॉन रॉल्स भी सेही कथा कहउचंती कि गोटे फेयर सोसाइटी हबो जोथरे अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल। नाउ तमे इमेजिन, सो जॉन रॉल एडवोकेट्स, सी एडवोकेट करूचंती, ही इज बैकिंग द थ्योरी ऑफ रिजर्वेशन। Reservation is a debatable topic these days, right? Now reservation को John Rawls justify करूचंदी considering the fact that suppose गोटे माने suppose there is a female reservation. Now John Rawls is saying there is, when people we are seeing a result कि result कि एमती केमती होची, जन को discriminate केमती करा जाउची, but we have to see कि they are also not starting at the same point. John Rawls कहउचंदी कि जन गोटे रेस रे जने जदि सेम पॉइंट रो स्टार्ट करूची तो ठीक अछि, जने जदि पछरु स्टार्ट करूची तो तार फिनिशिंग लाइन शुड बी लिटिल बियॉन्ड द लिटिल बिफोर द टारगेट, राइट? सो सीए कहउचंती कि एवरीबॉडी शुड गेट द बेनिफिट, and if lowest strata of the people get the benefit, that means everybody will get, because the rich have already got the benefit. Okay, so we'll go to the next slide. Okay, ए दुटा प्रिंसिपल विषय भी कहउचंती जॉन रॉल्स, इक्वालिटी प्रिंसिपल एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। नाउ इक्वालिटी प्रिंसिपल माने एटा से इक्विटेबल सेंस रे कहउचंती, माने एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ओके, तो जने सपोज सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करूची, सपोज जने विलेज रे अछि, जने बहुत रिमोट एरिया रे अछि, ता पाकर तो बही नथिबो, कोचिंग सेंटर एक्सेस नथिबो, कि ता पेरेंट्स एत रिच हे नथिबे, मे भी ताको कंटीन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन और सब पूरा फैसिलिटी मिलिबो, तो ताको हमको किछि बेनिफिट दबा को ही पड़िबो, सो दैट दे कम एट इक्वल स्टेज। ओके, तो जो इक्वालिटी प्रिंसिपल रे कोन होची कंट्री रे, आम कंट्री जेमति कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होची। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माने जो माने रिच तांको अधिक टैक्स दबा को पड़े, माने तमे देखिबो तम सैलरी सपोज 5 लाख 6 लाख 5 लाख पर्यंत आई थिंक इट इज टैक्स फ्री, after till 10 lakhs it is 10%, after that it, so if you have a 60 lakh salary, corporate to one can earn 1 crore, तो तांकर tax केते 35%. So they want to bring that equality for everybody, so that माने जो revenue टा and say tax टा केमती use होची to formulate the policies, welfare policies. Okay, so that is the equality of opportunity. So मैं देखो equality principle ले equality of opportunity अछि, not equality of the result, because result रे there is a positive discrimination. Okay, so if there is a cutoff for a particular category, suppose it's 100, for other category it is 90. Okay, so but we have to give the equality of opportunity first, so that they come at the same level and competition ने काको advantage न मिलो. Okay, now difference principle ले जॉन रॉल्स कोन कहउचंदी, जदि भी आमे मेरिट को प्रमोट करिबा, आमे गोटे डिफरेंशियली सपोज जने आईएएस क्लियर करूची, ओके, तो इवेंचुअली सी कोन तार बेनिफिट पय आईएएस क्लियर कला, सी कोन कला, सी जो आईएएस ऑफिसर हबो सी सोसाइटी पय करिवो, तो डिफरेंस प्रिंसिपल को भी से प्रमोट करूचंदी, बट आफ्टर समबडी गेटिंग द एडवांटेज थ्रू मेरिट, they will work again for the poor or for the weakest or for the disabled. Okay, जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हैला, ओके, हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 75% of the leaders were upper caste Hindus, and this is a fact, and only 1.5 to 1% of the leaders were from the backward castes. किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन टा कला सेटा कहा पय तमे देखो सेतरे सब जंक सेतरे आर्टिकल 17 अछि, आर्टिकल 15 16 आर्टिकल 14 सब अछि, तो से माने जो फॉर्मुलेट कले कि तमे डीपीएसपी भी देखि दियो, से माने समस्त पय कले, से माने पुअर पय कले, से माने बैकवर्ड कास्ट पय कले,
से माने माइनॉरिटीज मानन को पई कले आर्टिकल 39 आर्टिकल 29 एंड 30 ओके सो दीज आर फॉर माइनॉरिटीज तो सेटा केमती पॉसिबल होला से माने चाहिथिले भी करि परथांदे सो एटा को भी तमे जॉन रॉल्स एग्जांपल दे परिबो कि पॉलिसी मेकर दे केम टू अ ओरिजिनल पोजीशन एंड formulated the policies okay okay we'll go to the next slide okay John Rawls theory रे तो मैंने गोटे 60 मार्क क्वेश्चन पई 6-7 पेजेस आर एनफ it also depends on your writing speed and तमे केते बड़ क्लियर माने केते बड़ बड़ अक्षर लिखुछ तो 6-7 पेजेस आर एनफ आ गोटे 60 मार्क क्वेश्चन को तमे मैक्सिमम 35 मिनट 36 मिनिट्स रे लिखिबो ओके 60 मार्क रे नॉर्मली प्रॉब्लम कोन होय पिल्लांको पाखरे आइदर कंटेंट न थाए और टाइम न थाए जे भलो कि पढि कि जाइतो ता पाखरे टाइम न थिवो बिकॉज़ से चाहेबो मु सब लिखिबी जे पढि कि जाय न थिवो ता पाखरे कंटेंट न थिवो ओके तो तमे पढि कि सब जाइथिवो एंड यू मैनेज टाइम बाय अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट ओके तो क्रिटिक्स तमे 60 मार्क रे लिखिबा को ही पड़िबो सो इवन इफ इट जस्ट टॉक्स अबाउट जनरल थ्योरी ऑफ जस्टिस यू हैव टू राइट द क्रिटिक्स सो फर्स्ट क्रिटिक होचंदी कि मार्क्स कहउचंदी कि जॉन रॉल्स थ्योरी डजंट टॉक अबाउट द क्लास डिवीजन ओके नाउ जॉन रॉल्स थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट द सोशल लिबरलिज्म अबाउट द होल सोसाइटी बट मार्क्स कोन ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट एंड ही इज सेइंग दैट जेंति हमर क्लास डिवीजन होउची सोसाइटी रे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन मींस बट सेमति जॉन रॉल किछि कहू नांती so he is refuting the theory he is saying that this theory is not right okay so that one criticism आउ जो क्लास डिवीजन आज भी तमे देखि परियो आज भी सोसाइटी रे देयर इज अ रिच क्लास एंड पुअर क्लास माने ओवरऑल देयर इज अ रिच क्लास एंड देयर इज अ पुअर क्लास ओके तमे सपोज यू आर गोइंग टू बाय अ एक्सपेंसिव वॉच nobody asks your caste nobody asks your religion if you have money you are going to buy it simple okay तो हमर एबे भी that class division is there invisibly it is there तो मार्क्स कहउछंती कि जॉन रॉल्स शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस ओके फेमिनिस्ट क्रिटिक जणे अछंती सुजान ओकिन से कहउछंती कि रॉल्स सोसाइटी रे समस्त पई तो कहिले कि सोसाइटी रे जस्टिस केमती होबो बट रॉल्स डिडंट टॉक अबाउट द जस्टिस इन द फैमिली रे भी डिस्क्रिमिनेशन होची फैमिली रे सपोज गोटे पुओ आ झियो गोटे पेरेंट्स कर पुओ आ झियो अछि तो माने गां रे रिमोट एरिया रे आज भी दे आर ओनली if the parents are very poor only the boy get a chance to study but the girl does not get so there is a discrimination but Rawls didn't talk about it Rawls just talked about ki se differently able se female se caste se religion okay so what should be the माने how to do justice but family रे से किछ कहना आंती तापरे आ गोटे होची लिबर्टारियन कांसेप्ट सो लिबर्टारियन कांसेप्ट अनुसार कोआ जाउची कि रॉल्स को जो थ्योरी अच्छी एंड बेस्ड ऑन दैट सो रिजर्वेशन पॉलिसी और जो अफर्मेटिव एक्शन सेटा बेस्ड ऑन रॉल्स ओनली सो दैट इज डीमोरलाइजिंग और डिस्करेजिंग मेरिट ओके मानो तमे जदी सो दे आर सेइंग कि इफ यू आर रिजर्विंग इफ यू आर गिविंग a discriminate consideration for upliftment of the poor so you are actually compromising with the merit because some people who are meritorious they may not get a chance because you have already reserved the place for the poor or the lower strata of the people so libertarian concept talks ki merit is compromised tapare amartya sen कहउचंती कि experience of the policy maker is necessary okay जो पॉलिसी मेकर तमे एक्सपीरियंस नहीं तमे पॉलिसी कम फॉर्म करिवो से जो कोजी ओरिजिनल पोजीशन विजयानंद या आफ्टर आई एम डन मते गोटे मिनिट दियो तापरे यू आस्क योर क्वेश्चन तो से कहउचंती कि एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड नाउ तमे सपोज काली तमे ओएस हबो आईएएस हबो तमे तो एक्सपीरियंस थिबो ना तमे तो पढी सारचो पॉलिसी ऊपर कोन सब वसुधा स्कीम तमे जानि थिबा दरकार कि वसुधा स्कीम को मानव पई भूमिहीन मानव पई गृहहीन मानव पई ओके आ तमर से विषय आइडिया थिबा दरकार आमे सेई टाइम पढुचे जीएस रे कोन पढा होची अबाउट द सोसाइटी अबाउट द कास्ट जेंडर रिलीजन अबाउट द माने सब जिंस भीतर जने जानूची अवेयर होची राइट तो जने कहबो मु ओरिजिनल पोजीशन एंड मोर व्हील ऑफ इग्नोरेंस रे मु किछि जानिनी मु का पई पॉलिसी तमे जदी लोकन को जानि न तमे जानिन तम सोसाइटी रे केमते लोक अछंती केते जण पुअर अछंती केते जण वुमेन अछंती तम पॉलिसी कोन करियो ता पई
तो अमर्त्य सेन कहउछन्ती कि दिस इज अ यूटोपियन कांसेप्ट जोडा कि हम कहउतली तो VO ने को मन पे करछि he should know. So voice break, are you able to hear me? Yes, sir. Now audible. Now audible. तो सी कहउछन्ती कि the अमर्त्य सेन क्रिटिसाइज करछन्ती जॉन Sir, voice break होची सोसाइटी रा ब्रेक माने again voice break. Okay, 1 second. Yes. Is it better now? Sir, it's clear now. Okay. So if you have any questions, please ask, else I will go to the next topic, that is political culture. सर Yes. सर मुझे पचारथली कि अथॉरिटी एक्सप्लेन करदेबे कि लिबर्टेरियन कांसेप्ट टिके लिबर्टेरियन कांसेप्ट कहउछन्ती कि देखो एगुडा आजिकली भी माने these are debatable topics as I said. मु जोटा कहउछि सेटा एटा मोर व्यू नुए. Suppose for example there is reservation, okay? So whether it is justified, because some people will say because of the reservation I do not get a chance. Suppose 10 ta seat अछि सेतर 5 ta reserved. What about the person who has done well but he does not get seat because he is at the 6th position, okay? तो लिबर्टेरियन कांसेप्ट कहउछि कि आमे जदी सोसाइटी रो सबु स्ट्राटा लोकन पई काम करबा और स्पेशली जनरल कोन कहउछन्ती जो माने लोएस्ट स्ट्राटा रे अछन्ती. स्ट्राटा माने इकोनॉमिकली लोअर, okay, or they are oppressed because of the religion, caste, or because they are minority, okay? So or you know they are from backward caste, or they are because of the gender, because we are a patriarchal society, so definitely women are more suppressed माने historically. तो जनरल कहउछन्ती हम तांकु चांस दबा दरकार. सोसाइटी रो उन्नति सेतबेले ही पारिबो जेतबेले लोएस्ट जे अछि तार उन्नति होबो, ओके? नाउ लिबर्टेरियन कांसेप्ट कोन कहउछि नाइ जहा को जहा भी मिलिबो सेटा मेरिट अनुसार मिलिबो. तो दीटांको कॉन्फ्लिक्ट रे आछन्ती कि नाइ. So obviously libertarian they will blame John Rawls, they will criticize John Rawls because it is not as per the merit, because जनकर merit टिके कम थियो but he will get the advantage because of this John Rawls concept, because आमे कोन कहउछ सोसाइटी हमको समस्तंकर उत्थान हो, अपलिफ्टमेंट हो, बुझलो? अगेन सर थैंक यू. या अश्मीरा. Sir, libertarian concept basically anti-reservation concept कहि परिबा कि हमें? No, it's rather you should take it is pro merit concept. It is not anti reservation, it is pro merit. Okay, thank you. Yeah, Gayatri. Sir, VOI होची wheel of ignorance. Wheel माने होची परदा, curtain, okay? Next. Hello. Yeah, please tell me. Sir, difference principle टा आउथले एक्सप्लेन कर देबे कि? हाँ, difference principle टा होची तमरा जणे IAS ऑफिसर हला, ओके? तो ही तार डिफरेंशियली तार गोटे पर्सनल ग्रोथ हला कि नहीं. माने सपोज तमे suppose one person is there, he comes from a farmer's family, meant parent farmers. UPSC clear kala and he became an IAS officer. So there is an immediate shift in the status, economic status. Then there is a shift in the तमरा पावर, तम पाखरे पावर आसीबो, रेस्पोंसिबिलिटी आसीबो, तमको socially people will recognize, you will have dignity. Yes, utopian माने imaginary, okay? Dignity होबो. तो से जो डिफरेंस ता तमको मिलिला, जॉन रॉल कहउछन्ती तमे सेटा केवल निज पई यूज करिवो नाही.
माने जने कहबो आईएएस ऑफिसर हैला मो पई मो प्रॉपर्टी किनिबी मो फॉरेन ट्रिप जीवी सेमती करबोनी तमे जो डिफरेंस ता तुमको आसिला तुम जो डिफरेंस ता आसिला बिकॉज ऑफ मे बी योर मेरिट यू विल यूज दैट टू अपलिफ्ट द पुअर तेणु तुम एज आईएएस इंडिया रे कोन हो जने आईएएस ऑफिसर हेले से काम का पई करूची कोन कॉर्पोरेट मानव पई करूची से कोन कैपिटलिस्ट मानव से कोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट पई करूची कि से काम करूची पुअर पीपल को पई so that is difference principle. Thank you, sir. Okay. So I think everybody's doubt I have cleared. I will take one more question. If you have doubt, else I will go to the political culture. Any doubts? सर मोर डाउट को स्मृति सर जेमती कि हमें सर जो जॉन रॉल्स रहुची ताकर जस्टिस रहुची जे कोनसे कांसेप्ट रहुची सर ता पे किछि टर्म यूज हो जेमती कि एग्जांपल प्लेटोन को कांसेप्ट को कहा होची कि आइडियलिस्टिक आउ एरिस्टोटल को कांसेप्ट को कहा होची रियलिस्टिक सेमती जॉन रॉल्स को पे किछि ब्रीफ टर्म यूज है कि ना किछ नहीं social liberalism Yeah. Okay. So देखो जॉन रॉल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रो माने तमर जेमती थॉमस हॉब्स जॉन लॉक जॉन रॉल तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट माने कोन कि हमर जो सोसाइटी आमे समस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करिछु तमे का से तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करछो माने तमे सोसाइटी रे तमे गोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करिछो कि हम जब इंडिया रे टू विथ होम विथ द स्टेट कि तमे स्टेट को टैक्स देला स्टेट तुमको प्रोटेक्शन दबो पुलिस फोर्स लगेइबो तो जो माने ओपीएस हेबे से माने कोन स्टेट प्रोटेक्ट करिवे ओके तो सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हमें समझते से कॉन्ट्रैक्ट रे बद्ध तो बेसिकली हमर अनलिमिटेड फ्रीडम अछि कि तमे जाई का घर पस जाई परिबो तमे कोडी इलीगल काम करि परिबो कार प्रॉपर्टी एनक्रोच करि परिबो नाही ओके so this is because you are bound by a social contract so John Rawls is a scholar of social contract school okay but tanko concept हमको तांग concept होची it is more माने social liberalism में नुए it is a wholesome concept माने जोटा कि पुअर मानन को भी सुहाउची ओके आ जोटा कि रिच मानन को भी सुहाउची so it is based on the need jane rich kali poor he jibo so it will be more inclined so they will also so as per John Rawls they should also get the benefit okay okay anything else okay so we'll go to the next topic then last round सर द क्लासिकल लिबरलिज्म जोटी फॉलो होची सर जो भी कंट्रीज मान कर आपण जेंति कहले यूएसए बोली तो सेठी तो जो माने लोअर स्ट्राटा रे थिबे तो से माने तो प्रोटेस्ट की किछि भी माने गोटे तांको भितरे फ्रिक्शन तो रहतो नियति ना सर क्लासिकल लिबरल ताले से माने केमति नेशन को माने राइट सेठी क्लासिकल लिबरलिज्म काहे फॉलो होची बिकॉज़ सेठी बहुत कम लोक अछंती लोअर स्ट्राटा रे बहुत लिमिटेड लोक एंड सुन कौन सी कंट्री आज कंटेम्पररी वर्ल्ड रे प्योर क्लासिकल लिबरलिज्म नुह कि प्योर सोशल लिबरलिज्म नुह आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज़ अमेरिका रे भी तमे कोच पुअर अछंती यस देयर आर पुअर पीपल तांकर सोशल सिक्योरिटी अछि माने फॉर एग्जांपल इन यूएस द स्कूलिंग इज ऑलमोस्ट फ्री बट इंडिया रे तो स्कूलिंग इज नॉट फ्री तमे डीएवी जाओ कि तमरे साई इंटरनेशनल स्कूल और डीपीएस so every year there are 6 lakh 7 lakh fees जदियो इंडिया रे there are a lot of poor but US रे तमरो this is covered government is taking care of your schooling government is taking care of so everybody there is a mandatory insurance government is taking care of health सर गुट्टे जिंस पचारितले सर कि हमर भी तो सर 14 इयर्स जांगे जो कहउछन जे कंपलसरी फ्री जोडा कहउछन सर जेमिति कि माने जदि हम जीवानी आपन जोडा एग्जांपल देले अलगा स्कूल प्राइवेट स्कूल्स मान कर ये सब जिंस भी अवेलेबल जेंदी होउची एबे सर डीपीएसपी द्वारा तो सेटा कोन माने प्रोग्रेस करूची से हिसाब रे माने जेमिति यूएस रे फॉलो होची सेमिति फॉलो करछन माने ना सेटा होची हां माने
सेटा होची तमरा सोशल माने सोसाइटी रा सोशल लिबरलिज्म व्हिच इज स्टेट इज वर्किंग एज अ वेलफेयर स्टेट हम इंडिया रे कोन इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट नाउ हमर एबे फॉलो होची ना सिना बट आगुर कोन फॉलो होतला कि बिकॉज़ आगुर हम पाखरे पैसा नथिला इंडिया रे 14 वर्ष पर्यंत फ्री एजुकेशन दवा पे डू वी हैव मनी नो अर्लियर वी डिडंट हैव सो राइट टू एजुकेशन वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट it became a fundamental right recently I think 2002 right so 2002 re seta hela because we have money US रे तो पैसा अच्छी है बहुत so obviously they can afford for a compulsory education or free education तो तमे corporate रे तो काम मोर एक्चुअली डाउट की जे हमें कोन माने क्लासिकल लिबरलिज्म आडू को जाउचे कि हम ना 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 सुनो free schooling is not a feature of classical liberalism it is a feature of social liberalism US रे मु कहूची कि इट इज नॉट कंप्लीटली क्लासिकल लिबरलिज्म ओके यूएस रे तमरा सब किछि तमरा ट्रेड बिजनेस सेथरे ही इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तमे जोटा कैपिटलिस्ट मॉडल सो यूएस इज अ प्रॉपर कैपिटलिस्ट मॉडल ओके बिकॉज दे आर वेरी रिच दे कैन अफोर्ड अ फ्री एजुकेशन माने एजुकेशनल फॉर एवरीबॉडी नॉट जस्ट पुअर तमे सेठी सपोज माइक्रोसॉफ्ट रे काम करछु जोटी कि तमरा monthly salary is 10 lakhs in Indian currency still your children's education is free because that is a state sponsored so that is a different that is a feature but it is not a feature of the classical liberalism तमरा चाइना रे कम्युनिज्म कोन सेटा कोन कंप्लीट कम्युनिज्म नो it is 80-70% communism China is still a capitalist society because otherwise tame Vivo Oppo how China is selling manufactured goods out all over the country all over the world right so they also want to trade they all so that is a capitalist economy partially Russia is now almost capitalist economy earlier it was a complete communist okay कौन सी कंट्री आज का डेट रे प्योर कैपिटलिस्ट की कम्युनिस्ट नो है so it is always a mix okay so Okay, we'll sir. go to the yes thank you we'll go to the next topic that is the political culture sorry can everybody see the or everybody see the PDF Yes, sir. okay political culture normally तमरा 20 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो ओके 60 मार्क रो आसीबोनी बिकॉज़ एथरे विशेष किछि नाही 20 मार्क रो केमते लिखिबो मु कहि दोछि 20 मार्क क्वेश्चन तमे लिखिबो 12 मिनिट रे ओके 12 मिनिट रे तमे 20 मार्क क्वेश्चन लिखिबो डोंट सो मैक्सिमम मे बी 13 मिनिट एंड मिनिमम 10 मिनिट्स आउ 20 मार्क क्वेश्चन ने मिनिमम 3 पेजेस लिखिबो डोंट गो फॉर 2 पेज 3 पेज माने ओडिसा रे एग्जामिनर दे आर लाइक so they also see how much you have written because 3 घंटा एग्जाम ना कौन माने you cannot leave before the exam okay so culture माने होची people's values norms and orientation okay and culture गोटे it is a stable feature of the society माने गोटे कंट्री रो कल्चर किबा गोटे स्टेट रो कल्चर कि गोटे स्टेट रे भी गोटे पार्ट माने जेमति हमर वेस्टर्न ओडिसा रो गोटे कल्चर कोस्टल ओडिसा रो गोटे कल्चर कोंकण गोटे कल्चर ओके महाराष्ट्र रे भी डिफरेंट कल्चर अछि नॉर्थ ईस्ट रो कल्चर देयर इज अ ट्राइबल कल्चर तो कल्चर होची गोटे रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म ऑफ वैल्यूज और नॉर्म्स ओके आउ सेटा धीरे धीरे चेंज हो बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम माने इंडियन कल्चर जहा थिला more or less सेटा सेमती अछि but 90% अछि 10% it is moving towards westernization because of the globalization because a lot of people are going to US and they are staying there people coming from US and staying here okay culture is a long term trend and we can use it as a variable for comparison between the countries or between the places now political culture विषय किए कहउछंती प्रोपाउंडर का ना जाहेले भी लिखिबो सिडनी वर्बा एंड गैब्रियल आलमंड ओके आ पॉलिटिकल कल्चर केते टाइप रो पॉलिटिकल कल्चर होची मेनली चारि टाइप रो ए चारटा मन रखिबो एडा कोठी नाही ओके सो you can also mention David Easton's input output model माने स्लो माने input output is very simple model एथरे मेंशन करि परियो न मेंशन कले भी चलिबो ओके so David Easton कहउचंती कि society is a machinery so you give an input there is an output
So culture is one of the inputs. Okay. So first तो मु तापरे हमें डिस्कस करिवा what are different types of political culture. Okay. এই চারিটা political culture. Okay, you can take a screenshot or I will share it with you. এই mainly চারিটা political culture ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, that's it. 2 page ଲେଖିବ କି 2.5 page ଲେଖିବ, 3 page ଲେଖିବ, then you are done. First type of political culture होची parochial culture. Now parochial culture example होची if you have gone to Andaman Nicobar रे गोटे tribal group अछंती से तांको कहते जरावा. Okay, Jarawa tribe. Even there are sentinels. Okay, so सेमानंकर देश रे कोन होची, कोन न्यूज, कोन को देश का को अटैक कला, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोन, सेमानंको सेते किछि मतलब नहीं. Okay, so they have a very unique culture and they stick to that. Okay, so सेटा होची parochial culture where people are indifferent towards the political system. So सेमानर तो तमे माने mainland India रे भी देखिबो. Suppose there are places in Jharkhand, northeast. Are they really bothered about political scenario in the country? No. They have their own culture. So सेथि पई Indian government कोन करछि, बहुत गुडे जागा को district को in the northeast they are declared as autonomous district councils, right? So autonomous councils माने सेमाने तांकर decide करिवे कोन policy. सबु माने the places, resources, okay, हाँ right, कुछ फर्क नहीं पड़ता टाइप. So that is a parochial political culture. So Andaman Nicobar तम example दे परिबो Sentinelese, Jarawa tribe, और ओडिशा रे जे केते गुडा ट्राइब अछि जो माने still they stay in the remote jungles and they are least interested in the politics. So whether BJP आसो, BJD आसो और आउ को पार्टी आसो or Congress आसो, they are least bothered. Okay, so that is a parochial political culture. Second type of political culture होची subject specific political culture or subject political culture. ए केस रे कोन होची, people are not bothered about the input. Okay, but people are concerned about the output. माने गवर्नमेंट पैसा कोठु आनिबो, केमिति पॉलिसी फॉर्मुलेट करियो, सेथिरे किछि समानक they don't interfere, but they will see if there is a scheme whether they can benefit it from not. So they are more concerned about the output rather than input. Okay, so that is called subject political culture. Okay, now subject political culture तो देखिबो normally village रे जो लोक माने माने आगुरु बहुत एबे तो समस्त सबुरे पार्टिसिपेट करचंदी thanks to the media, thanks to development of information technology. There are NGOs. Okay, but आगुरु कोन थिला जो माने suppose normal daily laborer or farmers, they are just bothered कि हमर केमति पैसा आसीबो and subsistence agriculture हमें करिवो. Okay, but जेतबेले कोनसी स्कीम आसे they concerned कि मते से स्कीम रो बेनिफिट ता मिलो. Okay, but do they take part with the government to decide what kind of scheme should be launched? No, they do not. Okay, so that is a subject political culture जोटा कि इंडिया रा बहुत जगह रे अछि. माने गांर लोकम पचारिबो से माने कि जान नथियो, से माने सरपंच को जाय कहिबेनी, बट कोनसी स्कीम आसले से माने they will be ready, they will be going for to take the benefits. Third type of political culture होची participant political culture. Now India रे एबे धीरे धीरे we are moving towards participant political culture. Now participant political culture केमिति promote होची, because of the information technology, media. Okay, then there is accountability, there is Lokpal, there is what माने जो PRI system article 40 सेथिरे कोन गां रे सरपंच तांको माने तापरे जो माने ग्राम पंचायत से माने डायरेक्टली इलेक्टेड तो लोक को पार्टिसिपेट करूचंती. ओके, हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो एथिरे कोन इनपुट स्टेज रे भी माने लोक सरकार को जाई कहउचंती. इवन देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आजिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप माने they are doing so many things. Suppose women entrepreneur अछंती तांको पई कुछ पॉलिसी से माने जे सरकार को कहउचंती, ग्राम पंचायत माने बीडीओ को जाई कहउचंती कि सरपंच को कहउचंती कि हमर एई सब पॉलिसी आनिबा दरकार. ता परे तांको इनपुट अनुसार माने जो सिटीजनशिप फीडबैक सिस्टम जोटा कह जाउची. ओके, तांको इनपुट अनुसार डिसाइड होची को पॉलिसी को स्कीम सब आसीबो. यस, मिशन शक्ति तमरा सेल्फ हेल्प ग्रुप जते सब माने सेटा केमती लॉन्च होची, सरकार
କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଗରୁ କଣ ଏମଜି ନରେଗାରେ 100 रुपीस ଦିଆଯାଉଥିଲା भत्ता ଏବେ लोक जाई कहउछथि हमु 300 टका दरकार कि 200 टका दरकार बिकॉज 100 रुपीस हैज नो वैल्यू ओके तो एटा कोन पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर जोते पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट इनपुट as well as people are concerned about the output okay now there is a last one is again the reclaim mixed type of political culture yes so as Pujalin said so civic culture is the combination of all okay civic culture tinitar combination civic culture re kon sabu jinsa balanced now there are issues with participative political culture now participative political culture promotes demagogic leaders आगुर जो जर्मनी रे हिटलर राइज है केमती है लोक सपोर्ट कले इवन चिल्ड्रेन इवन दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन आर्मी आ हिटलर गोटे एमती करिश्मा थिला समस्ते रोड को पळे आसले कहले हेल हिटलर दे वर मार्चिंग अलोंग विथ हिटलर ओके सो एक्सट्रीम पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर which is not good for the polity of the country okay so civic culture is a combination of all three cultures and it is the most desirable political culture okay OPSC 2020 रो question आस्थिला how globalization is changing the political culture of a country तो तमे आंसर लिखि परियो एगुडा सब political culture जानलो तो ग्लोबलाइजेशन ना ऊपर कोन कोन इंपैक्ट तमे लिखियो सो ग्लोबलाइजेशन ना विभिन्न पिलर्स लिखियो मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओके आजिकली जोटी किए कोन इश्यू हैला लोक वीडियो रिकॉर्डिंग कर दोछंदी समस्त मीडिया चैनल अछि यूट्यूब रे एवरीबॉडी हैज अ फ्री मीडिया चैनल ओके सो एवरीबॉडी इज अ जर्नलिस्ट तो हाई पॉलिटिकल कल्चर रे तमे काम ठीक से करि परिबोनी पॉलिसी पैरालिसिस हो बिकॉज़ यू विल ऑलवेज अंडर threat you will always have people who protest against you whether it is a good policy you have launched or whether it is a bad policy okay so these are four types of political culture mostly 20 mark रो क्वेश्चन आसीबो जदी आसे तो किछि कंबाइन करा गले ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल हमें 60 मार्क्स लिखि परिबो okay now if you have any questions else I will go to the third topic that is political economy any questions सर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर पुणी थरे टिके बुझे दियंतु सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होची पब्लिक इनपुट माने कोनसी पॉलिसी लॉन्च हबो पब्लिक तार इनपुट रे माने जेतबेले स्टार्ट हबो सेतरे पार्टिसिपेट करिवोनी से पॉलिसी लॉन्च हे गला परे ता बेनिफिट नबा को चाहिबो ओके माने फॉर एग्जांपल तमरो जो भूदान ग्रामदान सेतरे कोन होतला कि पब्लिक सेतरे पार्टिसिपेट कला बहुत रिच लोक निजर जमी गुडा देले ओके जमी गुडा सरकार को देले तो से गुडा डिस्ट्रीब्यूट हला बट सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर रे कि सपोज गोटे फ्री राशन ओके और गोटे 2 टंकिया चावल सेतरे पब्लिक कोन कहितला कि तांको सरकार सेटा निज तरफ रु कले इवन इफ इट इज फॉर द बोर्ड बैंक बट देयर इज अ गुड पार्ट आल्सो लाइक एटा सेतरे माने बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन लोक माने दे गॉट द राशन at a माने at a very subsidized price so सेटा होची सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर रे कोन कि तमे पार्टिसिपेट करूछ एडमिनिस्ट्रेशन में माने सिटीजन पार्टिसिपेशन ओके सिटी हाँ सिटीजन जाई पार्टिसिपेट सिटीजन कहबे हमर एटा दरकार सपोज केबीके एरिया रे बहुत गुडे प्रेशर ग्रुप थ्रू रे से माने कहबे हमर ए दरकार एटी रोड हवा दरकार ओके हमर लैंड दरकार हमको लैंड दिया जाऊ ट्राइबल ग्रुप अछंती तांको पर लैंड नाही तो लैंड तमर जदी नथियो तुमको माने कोन आधार कार्ड बैंक अकाउंट माने बहुत जिंस प्रॉब्लम हबो तुमको बेनिफिट मिल परिबनी तो हाँ यस एक्टिव पार्टिसिपेशन सेटा होची पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर ओके ओके सो आई मीन लास्ट टॉपिक को जीवा वी विल जस्ट सो आई विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी के मते कहि परिबो कि व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी डिफाइन करो
No one. सर आमे पॉलिटिकली माने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की यूटिलाइज करके हम इकोनॉमी हम कंट्री रो इकोनॉमी या स्टेट रो इकोनॉमी को बढ़िया और गोटे एटा भी तो फीचर हो बोले हाँ डेफिनेशन एटा तो फीचर पॉलिटिकल इकोनॉमी माने कोन गोटे तम कोर्स रे लिखा है पॉलिटिकल इकोनॉमी तो माने कोन एक्चुअली एटा जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड टाइप रे होवे कि जेटा हमें कोन कोचो सर इलेक्टोरल बॉन्ड जेमती माने पॉलिटिकल पार्टी की केमिति कोन इकोनॉमी की स्ट्रेंथन करिया पई कोठी से सोर्स मनी सोर्स मु तुम कहि एटा गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पॉलिसी पर फोकस करे ओके ओके पॉलिटिकल इकोनॉमी ओके मु कहूँ पॉलिटिकल इकोनॉमी माने कोन Political economy is a concept where the economy and political theory coexist. Okay. Political economy is a concept where economy of a country and political theory or political scenario they coexist. Okay. How both impact each other. Tamara political scenario will impact your economy. Your economic power will impact your political strategy. Okay. I will give an example of China. So China रा जो तमरा बहुत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव सेटा तार मेन पर्पस कोन So one belt one road initiative. Can you please mute all of you? हाँ तारा मेन ये होची वाणिज्य ट्रेड ओके to trade with the Asian countries माने up to starting from Southeast Asian countries till Arab nations. Okay, so that is one belt one road initiative. They say कि we want to revive our Silk Route, earlier historical Silk Route or historical ocean route. Okay, but ସେଥିରେ କ'ଣ exactly ହଉଛି କ'ଣ? They are strengthening their political position in the Indian subcontinent. But ତାଙ୍କର direct objective ସେୟା ନୁହେଁ. Direct objective ହଉଛି to strengthen their business economy, oil flow from Arab countries to China. Okay, and to promote trade. तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ port କରୁଛନ୍ତି. All are economic, but it is giving them political power. Okay, so political economy has a lot of significance these days. Political economy रे mainly थाए दीटा perspective. Okay, तो गोटे गोटे करी आमे डिस्कस करिबा. Before that यूरोप रु म स्टार्ट करिवि. यूरोप रे आगुरु पॉलिटिकल इकोनॉमी रे बहुत सिग्निफिकेंस थिला. यूरोप रे प्रथमे कोन थिला मर्कांटिलिज्म. मर्कांटिलिज्म माने कोन? हां स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जोडा चाइना रो. मर्कांटिलिज्म माने सर अगेन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी रो डेफिनेशन डी एक्सप्लेन कर दियो. It is a concept where the economy and political theory coexist. Okay, माने तमर देशर अर्थनीति आ देशर राजनीति they coexist. They are independent, they are dependent on each other. देशर अर्थनीति तमर देशर राजनीति को प्रोत्साहन दोची और प्रमोट करूची. देशर राजनीति तमर अर्थनीति को प्रमोट करूची. So that is political economy. खाली इकोनॉमी कोन? तमर अर्थनीति. पॉलिटिकल इकोनॉमी माने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमी और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड पॉलिटी. बुझ परला? यस सर थैंक यू सर. हां एमते डेफिनेशन लिखिबो. डेफिनेशन नो एग्जाम नो जानि जो तमे से जिनसडा बुझिचो. ना पॉलिटिकल इकोनॉमी रे फर्स्ट कोन होची मर्कांटिलिज्म. यूरोप रे प्रथमे मर्कांटिलिज्म थिला. मर्कांटिलिज्म माने कोन? हां परस्पर ऊपर निर्भर. मर्कांटिलिज्म मीन्स तमरो पॉलिटिकल पावर डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड और एक्सपोर्ट्स. तो यूरोप रे कोन होतला आगुरु तमरो पोर्तुगाल हे गला, यूके हे गला, फ्रांस हे गला.
सेटु सब नाविक और स्पेन हे गला ओके कोलंबस वाज फ्रॉम स्पेन से नाविक माने जे देश आविष्कार करूथिले बट से माने केमती तांको पैसा के दोथला बिकॉज़ दे वर इकोनॉमिक तांकर ट्रेड से माने करूथिले आ से जो ट्रेड रो जो पैसा आस्तले सेतिर से माने किछि पार्ट इन्वेस्ट करूथिले सेतिर कोन बेनिफिट हैला कि स्लोली माने यो तम जो यूके रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला यस यूके रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला तो slowly what happened UK could colonize almost what 90% of the nations that time Australia Asian countries United States तो यूके रो जो पॉलिटिकल दबदबा ताको किए प्रमोट कला यूके रे माने यूके रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला तो दैट इज मर्केंटिलिज्म ट्रेड मर्केंटिलिज्म माने एक्सपोर्ट ट्रेड ओके एक्सपोर्ट ट्रेड विल प्रमोट योर पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ द कंट्री ओके तापर पॉलिटिकल इकोनॉमी रो आ गोटे कांसेप्ट हैला लैसे फेयर व्हाट डू यू मीन बाय लैसे फेयर के कोइ परिबो No government control. नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल जोटा जेमती चलती सेमती चालू डेवलपमेंट हो हला नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल और इन शॉर्ट फ्री ट्रेड ट्रेड सेमती गवर्नमेंट कंट्रोल करियो सर लेस कोन कोचो लेस नहीं जीरो 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 इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट लैसे फेयर होची मुक्त व्यवसाय व्यवस्था यस so yeah I think Chintamani has good terms तो बिल्कुल स्टेट रे इंटरफेरेंस नहीं जीरो इंटरफेरेंस लेस नो ओके तो हाँ तापर पॉलिटिकल इकोनॉमी लैसे फेयर माने होची तमरा फ्री ट्रेड ओके तो मेनली पॉलिटिकल इकोनॉमी रे दीटा पर्सपेक्टिव अछि गोटे होची मार्क्सिस्ट गोटे होची लिबरल लिबरल थ्योरी कौन कहूची कि हमर कंट्री रो डेवलपमेंट प्रोग्रेस कोऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी काहा ऊपर डिपेंड करे मार्केट ऊपर डिपेंड करे सबु जांको इज ड्रिवन बाय द मार्केट चाइना केमते करूची मार्केट सबु जां मैन्युफैक्चर्ड गुड मार्केट रे बिकुची आउ चाइना इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड सेमिति इंडिया तार सॉफ्टवेयर वी हैव अ वेरी स्ट्रांग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन्फोसिस टीसीएस ओके विप्रो so there so India रे सब माने जो सर्विस इंडस्ट्री रो बहुत रेवेन्यू आछे ओके so free trade laissez faire okay so one of the तमे लिखि परिबा अंकना एंटोनी डी मॉन्चेस्टा सीए होचंदी one of the propounders of political economy ए नोट्स ता मु तुम पठे देबी ओके नोट्स ता मते भलो से लेखिनी जस्ट पॉइंटर्स रे लेखिची so आउ जने थियोरिस्ट होचंदी पॉलिटिकल इकोनॉमी रो पॉल सैमुएल्सन ओके जे कि अगेन ही टॉक्ड अबाउट ट्रेड तापरे मु जो तमरो लिबरलिज्म कहली लिबरलिज्म रे कोन अछि तमरो क्लासिकल लिबरलिज्म बिसर लेखिबो जोतरे कि इट इज अ मिनिमल स्टेट ओके स्टेट रो मिनिमम इंटरफेरेंस खाली ट्रेड जे कैपिटलिस्ट नेशन माने कोन ट्रेड इज पावर ओके तापरे यू कैन टॉक अबाउट केन्सियन इकोनॉमिक्स इन पॉलिटिकल इकोनॉमी केन्सियन सो जॉन मेनार्ड केन्स ये कोन कहउचंदी कि तमरा मार्केट इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई इफ देयर इज अ डिमांड there would be supply if there is a lot of supply there the increase will be also mane there is an increase in demand okay so तापर केन्सियन इकोनॉमी कहउची जोटा कि पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कि समस्त इवेंचुअली विल गेट अ जॉब बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड काको कम सैलरी मिलियो काको अधिक सैलरी मिलियो बट फ्री ट्रेड रे कोन समस्त को जॉब मिलियो तो ऑब्वियसली देखो जो इंडिया रे प्लेसमेंट होची बहुत लोग फॉरेन जाउचंती ओके तापरे थर्ड ता होची न्यू लिबरलिज्म अगेन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी एठी केमती न्यू लिबरलिज्म because एथिरे state is interfering state is a welfare state the role of the state is emphasized okay तो एगुडा सब पॉलिटिकल इकोनॉमी रे लिखिबो तापरे तमरा ये जे कैपिटलिज्म रो किए प्रोपाउंडर सब तांको ना लिखिबो डेविड रिकार्डो आ जणा होचंदी एडम स्मिथ ओके तो कैपिटलिज्म विषय जतबे लिखिबो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म one is enterprise capitalism
What do you mean by enterprise capitalism? Enterprise capitalism माने capitalism run through enterprises, private companies or government companies. जो Infosys, TCS, Microsoft, Google, okay, Accenture. So these are enterprise capitalism. Okay. Tapari, you can also talk about social capitalism. Now, social capitalism, it is also a part of political economy. Social capitalism कोठी अछि तमरा यूरोप रे अछि. Main countries are Germany, France, माने mostly Central Europe and West European countries. आउ गुडे countries होछि Scandinavian countries. कि कहि परिबो को countries Scandinavian countries in Europe? Which are the Scandinavian countries? Norway, Sweden, Finland. I think Denmark is also there. Okay. So Scandinavia, then Sweden is not there. Scandinavian countries names. Okay. So Norway, Sweden, Finland, Iceland, Greenland. Okay, एगुड़ा ठीक अछि. तो ए सब कंट्री रे कोन सोशल कैपिटलिज्म. तो से कंट्री तमे जेतोले जीवो तमर सब फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री. हां स्वीडन आसीबो. तो सेगुड़ा कोन सोशल कैपिटलिज्म. एसो टर्म मन रखिबो. एंटरप्राइज कैपिटलिज्म, सोशल कैपिटलिज्म. ओके. तो ए सब कंट्री रे सोशल कैपिटलिज्म एटा काहे को जाउची? बिकॉज़ सेठी देयर इज अ मैरिज बिटवीन मार्केट कंपटीशन, सोशल कोहेशन एंड सॉलिडारिटी. सेठी खाली जे ट्रेड करिवो सिए ही ओनर नुहे प्रॉपर्टी रो. ओके. तो दैट प्रॉपर्टी और वेल्थ इज यूज्ड फॉर ऑल बिकॉज़ इट इज जनसंख्या कम तेणु सेठी समस्तन पई सेटा यूज होची. सो सोशल कैपिटलिज्म. ओके. और सोशल कैपिटलिज्म रो भलो इंपैक्ट और इकोनॉमिक मिरेकल होची जर्मनी. तमरो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 सरला केबे 1945. So Germany had heavy losses. It was defeated in the World War II as well as World War I, but it could come out as a superpower in 1960 and 1970 due to social capitalism, because everybody in Germany was powerful. Government empowered them. Okay. So social capitalism. Okay, and say social capitalism रे कोन हुए कि they invest a lot in vocational training, एजुकेशन, क्राफ्ट. इंडिया रे एबे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आछी सेटा सेतिरे सोशल कैपिटलिज्म देखिबा को पड़ुची, देखिबा को मिलिबो. बिकॉज़ इन सो people will be getting trained in vocational courses starting from class 7. Okay, जोटा कि यूरोप रे बहुत दिन रो अछि. और सारा so that यूरोप रे कोन there is a very less gap between the industry and the educational institutes. Okay, so social capitalism is good. So enterprise capitalism, social capitalism. Third type of capitalism is state capitalism. Okay, जोटा कि तमे पॉलिटिकल इकोनॉमी रे लिखियो. स्टेट कैपिटलिज्म रो प्रोपाउंडर होचंती ट्रॉट्स्की. ओके. आउ स्टेट कैपिटलिज्म माने कोन कि स्टेट इज यूजिंग इट्स पावर to control the production means. Okay, to oppress the working class. जेमती रशिया रे स्टालिन करूथले. ओके. पुंजीवादी होची कैपिटलिज्म. यस. तो कैपिटलिज्म मध्य तीन टाइप रो. स्टेट कैपिटलिज्म, सोशल कैपिटलिज्म, एंटरप्राइज कैपिटलिज्म. ओके. स्टेट कैपिटलिज्म रे तमे रशिया और यूएसएसआर रे एग्जांपल दे परिबो जोटा कि आउ स्टेट कैपिटलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय ट्रॉट्स्की. ओके. तो एटा फीचर गुडा कैपिटलिज्म. बट तमे देखो एक्चुअली यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट कंट्री बट इट हैड फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म बिकॉज़ स्टालिन हो, लेनिन हो, समाने कोन करथले देशर अर्थनीति को निजर पावर बढ़ेबारे यूज करथले, माने स्टेट को एम्पावर करिबारे यूज करथले. ओके. व्हाट एल्स यू कैन राइट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी. हां, आ गोटे होची तमरा कोऑपरेटिव्स. इंडिया सब कोऑपरेटिव्स दे आर आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म. माने हमर ओडिसा रे कोन ओडिसा कोऑपरेटिव सर्विसेज अछि जोटा कि माने हमर कोऑपरेटिव माने कोन अमूल हैला, ओमफेड हैला. ओके. सेतरे कोन स्टेट रो सब बोले माने जहां भी बिजनेस हबो स्टेट रो कंट्रोल रहउची के नै. स्टेट इज बाइंग
the crops, state is collecting the milk and distributing it. Okay, so cooperatives are a part of state capitalism. Okay, so political economy रे ये सब point लिखियो, state capitalism, तमर enterprise capitalism, social capitalism, mercantilism. Okay, then तमे लिखिबो positive liberalism, negative liberalism. Write all these points. आउ तापरे जॉन मेनर्ड केन्स कोन कहउछन्ती कि तमरा political economy is driven by demand and supply. Okay, एगुडा सब you will write. Let me check what else is left. Okay, तापरे केते जण बहुत जमती मार्क्स कैपिटलिज्म मॉडल को क्रिटिसाइज करिसंती, मतलब यू कैन टॉक अबाउट कि मार्क्स कहउछन्ती कैपिटलिस्ट मॉडल ओनली रिच क्लास और बिजनेस क्लास दे विल बी बेनिफिटेड. ओके, अमर्त्य रॉय टॉक्स अबाउट कि सोसाइटी को ही देखियो पड़िबो, माने होल, नॉट जस्ट कैपिटलिस्ट मॉडल. तापर पॉलिटिकल इकोनॉमी रो बड़ बड़ एग्जांपल तमे देई परियो, माने पॉलिटिकल इकोनॉमी बिग सब्जेक्ट. तमर यूएस, रशिया एंड इंडिया ट्रायोलॉजी, जोथरे कि आगुरु तमर यूएस आ इंडिया भितर रिलेशन बहुत खराब थिला बिफोर 1992 व्हेन तमर यूएसएसआर कोलैप्स्ड एंड बिकेम 15 नेशंस. सो रशिया केम आउट. तागुरु यूएस आ इंडिया खराब थिला रिलेशन. ओके, अमर्त्य सेन टॉक्ड अबाउट सोशल लिबरलिज्म. ओके, एलपीजी हैला. तापर इंडिया कोन हैला, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट मॉडल को शिफ्ट हैला. यूएस कंपनी सब आसले, तापर इंडिया रो रिलेशन यूएस से तो भलो भी हे गेला. तो इकोनॉमी जो एलपीजी हैला आ इंडिया तमरो वर्ल्ड बैंक आ आईएमएफ रो लोन भी लेला. ओके, इंडिया टुक द लोन्स एंड सो धीरे धीरे कोन यूएस रियलाइज्ड कि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर अस, हाउ कैन वी स्टे अवे फ्रॉम इंडिया, कारण सॉफ्टवेयर बिजनेस वाज आल्सो पिकिंग अप. ओके, तो एगुड़ा सब लिखिबो. तापरे हाउ ऑयल इकोनॉमी, क्या पॉलिटिकल इकोनॉमी रे तमे ऑयल इकोनॉमी को भी ये करिवो, बिकॉज़ ऑयल इकोनॉमी रे कोन ओपेक प्लस कंट्रीज अछंती एंड दे आर डिसाइडिंग द प्राइस. नाउ आजिकल जदी समान ऑयल प्राइस बढ़ाई देबे, ऑयल क्राइसिस हे जिवो. ओके, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी रे एगुड़ा सब बड़ बड़ एग्जांपल एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. इवन चाइना, इंडिया, तो इंडिया हैज अ डेफिसिट. चाइना थिंक्स दैट इंडिया इज अ बिग मार्केट. So if straightforward they will attack India, the problem is na. So this is a big example of political economy. Political economy रे out example होची यूक्रेन रशिया वॉर, जो थिरे कि India is staying silent because India is buying gas, oil from Russia at a cheaper price. जदि India will vote against Russia, okay, तो कौन हम पॉलिटिकल सिनेरियो खराब हो जिवो. तापरे कोन हबो, इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करिवो इकोनॉमी रे, बिकॉज़ इंडिया हैज टू बाय एक्सपेंसिव ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स रादर देन रशिया. ओके, यस, पुट इन डिस्काउंट इंडियन ऑयल. सो एगुडा सब होची पॉलिटिकल इकोनॉमी, मान तमे इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट करूची तमरो पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद द कंट्रीज, तमरो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके, जो स्टेट रे देखिबो गोने पॉलिटिकल पार्टी जितिबो चाहंतिबो, समान कोन करिवे, free by politics. That is political economy, because free by politics है तमु vote मिलियो, right? So that is political economy. So we studied 3 topics: John Rawls' theory of justice, political culture, and political economy. Okay, next class we will go as per the syllabus, so we can study the various approaches to political theory: normative approach, historical approach, empirical approach. एगुड़ा सब पड़ेगा. Okay, if you have any questions please ask, else I am done with the class. सर आपण Yes. बुक रो सोर्सेस गुडा को कहितले फास्ट मु टिके सुनि पार नथले, टिके कहि देबे आ थरे. Sources, okay, sources होची देखो, sources गुडा वेरी करिवो हैला, कोन से गोटे सोर्स फॉलो करिवोनी. तमे ओनली आईएएस फॉलो करि परिवो, तार कंपाइलेशन गुडा आ ओपी गोबा बही अछि सेटा भी तमे फॉलो कर परिवो. ओपी गोबा पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गोबांकर गोटे इंडियन पॉलिटिकल थॉट अछि. तो इंडियन फिलोसोफर जते तमरा मनु हेले,
बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह एगुड़ा सब जोड़ा सिलेबस अच्छे। आई थिंक भगत सिंह इज नॉट इन सिलेबस, सेटा फॉलो करिवो। ओके ओके हाँ पीडीएफ में शेयर कर देबी। ओपी गोबा देखो मैं लिखुची चैट बॉक्स रे। ओके 8:30 विल क्लोज द क्लास। आई एम जस्ट राइटिंग। अरे एटा कोन किछ लिखियोनी चैट रे। ओके ओपी गोबा ओके ओनली आईएएस Andrew Hewood. Please refer to the chat box. I have written all the sources. How back internet is the biggest source. Internet, YouTube. Thank you, sir. Good night, sir. Okay. Good night. Sir, Subha ma'am, Subharanjan ma'am. Leave. Those who have questions can stay back. कौन है? सर शुभ्रारंजन मैम को नोट टाइम सर बेसिक ପାଇଁ सफिशिएंट होवा कि केतोड़ा जिंस बहुत भल देछि। फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म, कास्टिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एवडा भल देछि, बहुत बडा देछि। मार्क्स वार्क्स भी भल देछि, बट सेटा टिके लेंदी देछि, माने पढ़ी देला बेटर। किंतु जहा फॉलो करिवो दर आइदर तमे ओनली एस फॉलो करिवो और शुभ्रारंजन इट इज अप टू यू। दीटांग ठीक अछि। ओनली एस टिके प्रिसाइज देछि, सेटा तमे फॉलो कर परिवो। आ केते गुडा थ्योरी तो तुमको बहिरु ही पढियो पड़ियो, तार किछि शॉर्टकट नै। मान जेमति कहले जॉन रॉल्स तमे बेटर पढ़ी देबो ओपी गोबा थरे, इट इज गुड। तम बाय जे टाइम अछि, टाइम जदी नाही तमे कंपाइलेशन पढिबो। दोस हु वांट टू लीव प्लीज लीव, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक्चुअली मैं भी रिसेंटली बोर्ड करछि शुभ्रारंजन मैम को नोट टाइम एंड सर ओके सर एबे पॉलिटिकल थ्योरी मो स्टार्टिंग करला को सर प्लाटो रो बहुत माने लेंथी टॉपिक अछि तार। हाँ सेटा माने मु पर्सनली पढ़िनी सेटा, तो आई कैन नॉट कमेंट कि सेटा गुड और बैड। मु एटा कहूँ कि तुमको जदि कंफर्टेबल लागुछ तमे पढ़ी दियो, माने बट तमे जदि सेटा पढ़िबो अन्य सोर्स पढ़ानी, बिकॉज़ तमे पुनी मन रखिबा कष्ट हो जिवो। ओके प्लाटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस मु पढ़ाई देबी। बहुत सिंपल, माने ताको बहुत लेंदी नोट्स किछि पढ़ानी, बिकॉज़ एग्जाम पई ना टिके कॉम्पैक्ट पढ़ो और तमे निजे पढ़ी कि टिके निजर नोट्स बनाई दे। ओके आज्ञा सर, नमस्कार सर। यस सर आईआर पैट पई कोन फॉलो करिया पड़ियो? आईआर भी तमे ओनली एस पढ़ो भलो अछि। ओनली एस यू कैन स्टडी। आउ केते गुडा तार कांसेप्ट तमे एंड्रयू हेवुड मु कहबी सेटा पढ़ी दबो। सब पढ़े सेटा फॉरेन ऑथर बई ना, टिके माने लेवल टिके हाई। बट तमे जे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोछ, जदि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन पास करिया थांदा किछि पढ़ले चढ़िबो। एंड्रयू हेवुड केते गुडा टॉपिक पढ़ी दबो हला। ओनली एस इज गुड। ओनली एस लेसन पढ़ो, सेथरो मु कहबी एई पेज टा पढ़ो तमे पढ़ी दबो एंड्रयू हेवुड। सर हिंदू पेपर जो एडिटोरियल पेजेस आछी सर सेई थ्रू भी किछि पढ़िले हाँ हाँ बेटर हे। आज्ञा जो सेगुडा पढ़ी देई कि ताको कटिंग रखियो, पढ़ी देई कि भूल माने तार कटिंग गुडा रखियो कि मोबाइल ले फोटो उठे दे पीडीएफ पर रखियो। नहीं सर मु कटिंग करी कि रखुची आ माने हाँ किछि टाइम हेले लिखि दोची से हाँ माने रशिया यूक्रेन वार गुडा को रोजी कि ईडब्ल्यूएस रो गोटे फ्रंट पेज रे रहउतिला आ एसएससी सुप्रीम कोर्ट कोन माने तारो होउतिला किछि टॉपिक ऊपर सेई थ्रो भी सेटा सर नोट करी दोची। ठीक अछि। सर बट से ओनली एस का पढ़ी दियो, कंपाइलेशन बहुत भलो, माने केतोडा जिंस इट इज गुड, वेल रिटन। आज्ञा सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर गोटे बुक जो आई थिंक वी आसे, आर यस सर, सर गोटे बुक जो आसे ग्लोबलाइजिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर आईआर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सर सेटा फॉलो करिया पड़ियो कि? सेटा भलो, सेटा सब फॉलो करिवनी, मु जोडा कहबी सेटा पढ़ियो, सेटा बहुत भलो अछि। सेटा बोते बेस्ट स्टीव स्मिथ एंड बेली सेटा ना? यस यस सर। एंड्रयू हेवुड। सर आपण आज सर आपण आज जो टॉपिक डिस्कशन कले बहुत भलो से बुझेगा, बट सर
ମାନେ ମୁଁ ବିଗିନର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢେଇଲେ ସେଇଟା ବେସିକ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ PSIR? ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ, ଶୁଣ ମୁଁ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ ରାଇଟ୍ अबाउट ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଓକେ, ତମେ ଲେଖିବ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଥିଓରି, ଯେତେ ଯାଙ୍କ ଥିଓରି ସବୁ ଲେଖିବ ଆଉ କଣ, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, तापरे तमरो ओरिजिनल पोजीशन, डिफरेंस प्रिंसिपल, इक्वालिटी प्रिंसिपल, मैक्सिमिन प्रिंसिपल लिखियो सब जानो। लॉन्ग क्वेश्चन। पॉलिटिकल कल्चर गोटे टर्म पड़िबो, व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सर पॉलिटिकल एटा अछि कल्चर। सिलेबस रो पॉलिटिकल थ्योरी पेपर 1 रो अछि, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी अछि। यस यस, सेगुडा सब लिखियो। तो मु तुम पॉलिटिकल इकोनॉमी एते दिन सकाई कहले एगुडा सब लिखियो तमे। आज्ञा सर आउडी जोटा आपण पढेले जॉन रॉल्स रो सेटा थ्योरीज ऑफ जस्टिस ओनली देइछि, किंतु काहार भी देइनि, खाली थ्योरीज ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स मु काहेंगी कहली बिकॉज़ सेटा क्वेश्चन ने आसीछि पास्ट रे, कि आज्ञा सर चैप्टर आसीछि। ओके, माने सेठी किछि लेखिनि जॉन रॉल्स की तमरो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, बट जॉन रॉल्स आसीछि, प्लेटो भी आसीछि। सो प्लेटो वी विल डिस्कस जोगुडा बट सर बिल्कुल आसीनि। सर जदि थ्योरी ऑफ जस्टिस जदि पचला ताले कोन हमें माने किछि माने 4 जण 5 जण लिखियो ना थ्योरी ऑफ ना आपण जस्टिस जोटा एंड कहले ओके थ्योरी ऑफ जस्टिस किछि पचरिबोनी, बिकॉज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सेति में हां सेति में ओके। तो थ्योरी ऑफ, हाँ, if you want to leave you leave, no problem, Diksha. Okay, if you do not have any questions, so thank you so much. Okay, क्या कौन सी abstract question पढ़िबनी सर एटा? मु एक्चुअली बिगनर, तो मु कोठु स्टार्ट कले टिके मते इजी हेबो। ओनली आईएएस रो जो आपण कहले मटेरियल टा पूरा पढ़िबा स्टार्ट कले। तोर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड अछि ग्रेजुएशन ना? ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पेपर थिला पॉलिटिकल साइंस, किंतु ए सब जिंस नाही ना जो पॉलिटिकल साइंस रे ग्रेजुएशन रे। ओनली एस पढ़ा स्टार्ट करो। कोटा में सर? ओनली एस। अच्छा, थैंक यू सर। ओनली आईएएस ना ओपी बाजार कोटा फॉलो करिवे? ओपी गोबाटा टेक्स्ट बुक। ओके, तमे देखो सिलेक्टिव पढ़िबो केतोडा जिंस तमे देखो, ओनली एस रे न बुझी परले ओपी गोबा पढ़ो। ओपी गोबाटा पढ़ देले कोन कि तमरो गोटे यूपीएससी स्टैंडर्ड रो प्रिपरेशन भी हे जिवो। आज्ञा सर, जब आप कॉल कहले आउ इकोनॉमी कहले सर, सेति पे कोन फॉलो करिवो? सेटा मु इंटरनेट रो ये करछि, ता सेटा कोटी नाही। पॉलिटिकल कल्चर और इकोनॉमी कोटी भलो से देइनी ठीक से। आ तमे जदी पढ़ियो चाहौ हे एंड्रयू हेड पढ़ी परिबो, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी सेठी खाली 20 पेज देइछि, तापर किछ बुझा पड़िबोनी। यू कैन ट्राई, आई डोंट हैव ए आज्ञा प्रॉब्लम। सर, ताको କରିଥିଲି ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ टाइम लागो। डोंट वरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी मु जो पॉइंट कहली सेति पढ़ दियो। तमरो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, मर्केंटिलिज्म, केन्शियन मॉडल, एडम स्मिथ, तापरे तमरो डेविड रिकार्डो, सेगुडा सब पढ़ दियो। आज्ञा, थैंक यू सर। बेसिक पढ़ले लिखिए भी टाइम होबनी है ना। Okay guys, thank you so much and good luck. We will meet in the next class. Sir, Thank you, sir. Thank you. All the best. thank you sir. Have a good night. Sir, thank you sir. Good night sir. थैंक यू सर। प्लीज टिके मटेरियल टा अपलोड कर देबे।